नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों. Welcome once again to your favorite YouTube financial education channel stockincome.in. I'm Alok and I'm back with our next episode of the weekly series Weekly Market Outlook for the week starting 6th of February 2023. So, in fact this has been a very turbulent week. बहुत ही turbulent, बहुत ही violent कह सकते हैं आप ये हफ्ता रहा है. एंड रीज़न शायद हम सबको मालूम ही है. वन सिंपल वर्ड, अदानी. सो अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने बहुत सबको परेशान भी किया है, सबको हैरान भी किया है, मार्केट्स को बहुत मूव भी किया है. बट अगर हम अल्टीमेटली देखेंगे तो मार्केट नेट लेवल पे, वीकली लेवल पे उतना मूव एक्चुअली नहीं करा है. बट स्पेसिफिक बिकॉज एक्शन हैज़ लार्जली बीन लिमिटेड टू अदानी स्टॉक्स. विल टॉक अबाउट अदानी इन ब्रीफ एंड विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स. सो लेट्स गेट गोइंग. सो हम सब फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं न्यूज़ बेस्ड फैक्टर्स, डेटा न्यूज़ और डेटा बेस्ड फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स में. हमारी कोशिश होती है कि अंडरस्टैंड करें क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है. हम अपना बेस्ट गेस, बेस्ट एनालिसिस लगाते हैं. ओके, तो अगर हम बात करें इंडाइसेस की, सो एज आई सेड, इन स्पाइट ऑफ अदानी फॉलिंग, अदानी एंड उसके ग्रुप के स्टॉक्स इतने फॉल करने के बावजूद भी निफ्टी इज एक्चुअली पॉजिटिव. दिस माइट सरप्राइज यू एंड सरप्राइज मोस्ट ऑफ पीपल, बट निफ्टी इज एक्चुअली 1.42% पॉजिटिव एंड बैंक निफ्टी इज अप 2.86%. सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट वीक. और इंटरनेशनल इंडाइसेस की बात करें तो वहाँ न्यूज़ इससे भी बेहतर है. S&P 500 is up 1.62% and Nasdaq is 3.31% up. Nasdaq in fact has been showing a very decent recovery in the past few days and weeks. So things seem green and positive here. Okay. FII DI डेटा की बात करें हम तो FIs अभी ना जो ये मंथ चालू हुआ for the month of February, FIs have been buying for, in fact they've been selling for 2200 crore, whereas DIs have bought for more than 4000 crores, right? So as of now net figure is positive because DIs have bought more than what FIs have sold. But January की बात करें, in the month that went by, FIs sold heavily, more than around 41,465 crores. DIs ने काफ़ी buying भी किया but could not fully match up to the FI selling, sorry. So that's how it seems. But let's see how it happens for the India. VIX has fallen sharply in the week, down around 17%. It is now at 14.39 for the week closing. और ये इसमें ज़्यादातर जो डिक्रीज़ आया है इंडिया विक्स में, जिसको हम फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, ये लास्ट 2 डेज में आया. उससे पहले बढ़ गई थी काफ़ी, बट लास्ट 2 डेज में देयर हैज बीन सम सेंस, सम रिकवरी एंड naturally VIX has also come down accordingly, right? Okay, so let's see what happens. Crude oil has slipped during the week, down around 7.39%. I don't see a specific reason, but that's how it is. So, और इस वीक का एक बहुत बड़ा इवेंट जो आपको मालूम ही है पिछले वीक का, वो था बजट. आई एम श्योर यू गॉन थ्रू अ बजट एनालिसिस इन सो मेनी प्लेसेस. यू हर्ड द बजट लाइव ऑल्सो मे बी, राइट? सो हम बजट को पूरा डिटेल नहीं करेंगे, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सेक्टर्स जो बजट से पॉजिटिवली या कि नेगेटिवली इम्पैक्ट होने की संभावना है. जिनसे सेक्टर्स दैट माइट बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द बजट. So positively impacted sectors are infra, capital goods and cement, because there is a huge capex trust and increased allocation towards railways, towards roads. Chemicals में custom duty को reduce किया गया है. बैटरी स्टोरेज एनर्जी सॉल्यूशंस पे फोकस है, वो पॉजिटिव हो सकता है. ऑटो की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स की बात हो रही है. देयर इज सम एग्जम्पशन ऑन सम इंपोर्ट ऑफ सम क्रिटिकल मशीनरी, राइट? ईवीज, बैटरीज, फेम सब्सिडीज जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेज करने पे सब्सिडी थी, उसका बजट को इंक्रीज किया गया है टू गिव अ बूस्ट टू द ऑटो सेक्टर. एंड देयर इज अ वेरी क्लियर टॉक ऑफ स्क्रैपेज पॉलिसी. पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने की बात की गई बजट में, बजट स्पीच में. सो जब पुराने व्हीकल्स स्क्रैप होंगे तो उसकी जगह नया व्हीकल, नेचुरल सी बात है, परचेज किया जाएगा. सो व्हेन ओल्ड व्हीकल इज डिस्कार्डेड, अ न्यू व्हीकल इज नेचुरली परचेज एंड दैट लीड्स टू हायर सेल्स फॉर द ऑटोमोबाइल कंपनीज. पावर सेक्टर में भी देयर इज अ ह्यूज थ्रस्ट ऑन ग्रीन एनर्जी, right? And there have been incentives linked to that, right? So these are the sectors that could be positively impacted by the budget, whereas some sectors that could take a hit due to the budget provisions or
और proposals is OMCs, oil marketing companies, because जो उनके losses हो रहे हैं for selling fuel at prescribed prices, there is no provision to cover them or give them subsidy, right? So real estate might get impacted in a very different way, because बहुत सारे टैक्स लूप होल्स जो हैं इस बजट में बंद कर दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स ऑन मोर देन 10 करोड़, राइट, उसको अब टैक्स फ्री नहीं रहा है, उसको अब उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं. तो उसकी वजह से रियल एस्टेट में शायद थोड़ा सा नरमी देखने को मिल सकती है सेक्टर में. लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, राइट. सो इंश्योरेंस पॉलिसीज मोर देन 500,000 विच इज़ 5 लाख पर एनम, राइट, उनके रिडम्पशन could become taxable at the marginal tax rate. So that sector might also be negatively impacted. In fact, that's actually बहुत छोटा segment है, छोटा part है life insurance sector का, but because of this all these stocks related to the sector, actually they took a hit on the budget day. बाद में शायद थोड़ा सा recovery भी आएगा. Okay. US Fed जिसके has been trying to tame the inflation कम करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए उन्होंने बार बार इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किया है, राइट. 4 टाइम्स उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया, राइट. एंड दैट इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज एक्चुअली. सो लास्ट इन द रीसेंट मीटिंग दे हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट, राइट, बिकॉज इन्फ्लेशन इज शोइंग साइंस ऑफ कमिंग डाउन, बट इट इज स्टिल नॉट इन द कंफर्ट जोन. अभी भी 20 ईयर हाई के करीब चल रहा है इन्फ्लेशन, राइट. सो 20-30 ईयर्स हाई के करीब चल रहा है. सो इट इज़ वेरी हाई. So they've not said कि हम आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, but they have also give indication that the Fed is bit happy with the fact that inflation थोड़ा सा नीचे तो आ ही रहा है, right. So they are likely to have maybe 1 or 2 rate increases more, we don't know, right. But then aggressiveness उसका खत्म हो गया. पहले 75 बेसिस पॉइंट किया था, 50 बेसिस किया, अभी 25 बेसिस किया, which was in line with market expectations. तो उसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम कोई देखने को नहीं मिला है. US नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ आता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर द US मार्केट्स, एंड इन फैक्ट US बीइंग द मदरहुड इकोनॉमी impacts every other economy in the world, right. So it has come very positive actually. Some 517,000 new jobs have been added as against the consensus of 185,000, right. डबल से ज़्यादा नई जॉब्स आई हैं नॉन फार्म पेरोल सेक्टर में. So which sounds like a very good news for the economy, but it's probably a double-edged sword, because जब jobs ज़्यादा आ रही हैं, unemployment rates are at the historic lows, so inflation बढ़ता है, because people have money, people can spend, there's a demand created and inflation can go up. चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं. Whereas Fed has been trying to reduce inflation, तो आपस में दो forces opposite work कर रही हैं. Good for economy, but then that might force Fed to keep increasing interest rates. Let's see how data comes from the subsequent months. रिजल्ट सीजन तो हमको पता चालू ही है. रिजल्ट्स काफ़ी कंपनीज के, इंपॉर्टेंट कंपनीज के इस बार आए हैं. काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बाय एंड लार्ज. सो बजाज फिनसर्व, L&T, कोल इंडिया, SBIN, ब्रिटानिया, ITC सब ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, अबव एक्सपेक्टेशंस. थोड़े से वीक रिजल्ट अगर आए हैं तो थोड़ा सा टाइटन के आए हैं, राइट, बट वो भी इतने बुरे नहीं थे, UPL के एंड टाइटन के. So results have been actually good, and so things are looking good for the Indian economy. That's what one can say. Next week कई कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं. The list is in front of you. Tata Steel, Bharti Airtel, Adani Ports, Ambuja Cement, Hero MotoCorp, Bharat Dynamics, Hindalco, IRCTC, Mahindra and Mahindra, right. So please keep an eye on these results. These might help you define the future direction of these stocks and the sectors and market as a whole. बात करते हैं टेक्निकल्स की. टेक्निकल्स क्या बोलते हैं? तो बिफोर आई गो देयर, अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज primarily for educational purposes. I am a trader and investor in the markets. At the same time, I am not a SEBI registered advisor. So nothing I say should be taken as an advice to buy or sell anything. Please do your own research or consult a registered advisor, right? So I am doing this, I do this analysis for myself and share with you for the larger good, hoping that it will benefit you. ये है निफ्टी का डेली चार्ट, recent daily chart. So as we see, there is the multiple levels of resistance and support. There is a good resistance coming up at 18,260, right, around 18,250 levels, and then there is a significant resistance at 18,500 also.
So I feel market on the upper side could go to 18,500. On the lower side, 17,400 is a very good support. Market have respected that support in the last week's fall also, right? And they just breached that for some time only. Never, even hourly candle was not closed below that. So 17,400 has provided as a good support. तो उससे नीचे जाने के चांसेस कम हैं, मार्केट को 18,500 के चांसेस ज़्यादा है. अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें, so there is some interesting things here. If you look at this put size, near to ATM बहुत heavy put writing हुई है, बहुत heavy put writing हुई है, जबकि अब call writing जो है near ATM and above ATM हुई है naturally, but उतनी heavy नहीं है, right? So this is telling us, as well as charts, that both telling us कि इस बार जो है there is a positive bias as of now. अगर हम charts पे वापस जाएं तो we see very long shadows on the candles, on the lower tails, lower shadows, right? So that shows market might have gone down, but there is a good recovery also. So I feel Nifty can trade with a significant positive bias for the week. On the lower side, 17,500 may not be broken, 17,400 and 500 or 500 may not be broken for the week. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, पर उससे पहले हम आपको याद करा दूं, वी हैव presence on other social media also, like Instagram, like Twitter, wherein we continuously try to upload very relevant, important things that might help you, you might like them. On Insta, every day we upload Market Student Tomorrow. My request and suggestion to you is go and check that, subscribe to those things. On Twitter, every day there's a market view uploaded before the market starts, and then for sure we keep adding a lot of learning material, learning concepts which we prepared with a lot of hard work. So I'm sure you will find them very useful. Please go and subscribe, right? So and watch them so that you can benefit from them, and we always welcome your comments, as in say what you feel like. Coming back to Bank Nifty, friends, again the chart shows a short-term uptrend, right? There's been significant upper movement, long lower shadows, right? So it seems that market might move towards 43,600. That's the upper limit that I see, but trade with a positive bias. On the lower side, 38,500 seems to be a very good support, but actually 39,800 might itself hold. I feel 39,800 can also hold, but worst case scenario 38,500 market can go there, right, for the week. बैंक निफ्टी ऑप्शंस चेन भी हमको कुछ ऐसा ही बताती है. देयर इज अ सपोर्ट एट नियर ATM लेवल्स. 40,500 इज अ गुड सपोर्ट, 40,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट विच इज क्लोज टू 39,800, एंड ऑन द अपर साइड रेजिस्टेंस इज अ लिटिल फार, राइट? सो markets are likely to trade with an upward bias even on the Bank Nifty side. So that's my feel and analysis. Let's see what markets have really in store for us. So friends, this was my opinion analysis for the week starting 6th of February. Thank you for being with us. Thank you for spending your time with us, for your comments, for your likes. Do feel free to share this channel, this link with other people who can benefit from it. And if you haven't pressed the notification icon even now, my request is go ahead and do that right now so that you can get to know very quickly when anything new material is uploaded. Till the time we see you next week, happy trading, happy investing. Jai Hind.